Thank you, Mr. Jahid, first of all, for joining us. Yeah, thank you. It's a great pleasure to have you here with us today to share your knowledge. It's great to have you. We are extremely delighted to have you here. Yeah, thank you Yeah. everyone for joining. I can see there are almost around 20 people joining. So there were Yes. some Yes. technical issues, so I just joined a few minutes late. So yeah, without Yeah. much delay, I would like to start. Then, right. So I hope everyone is curious about knowing what Canva can do. But before Yeah. I talk about what Canva can do, I guess you guys are also looking into design aspects, and you might have heard about so many tools, right? Photoshop. You have heard about different kinds of pixels, and now AI tools are coming out for image designing. So why Yes. Canva, and why you can use Canva? So I'll just like to give some kind of brief around why Canva is getting popular for day to day. Like you see, Canva was started by a woman like Melena Parkins. She just started as a small platform, but then it got valued for around like $40 billion now across the world. Now, why is it Great. happening? It is happening because Canva has got multiple revenue streams. It has a huge number of user bases, and it has like found acceptance in every country in the world and made things easy for the common person, not those who are not professionally trained like around 1 to 2 years in graphic designing. They can get easily hold of Canva as a tool. Okay, so I even got response from Canva when Canva was recently launching some new features. They have launched some whiteboards, they have launched Yeah. many other things for websites, and so many new features, and even the AI image generator has come up. So why I'm speaking, why I have made this as a specific course is because no one needs to go through so much of a tedious process of learning Photoshop. So if you know something about Photoshop, I hope you guys have some knowledge of or some understanding. If you know that you have to put so many layers in Photoshop, right? You have to put so Yeah. many so different kind of images, and just to create one simple image or carousel you could have gone through 9 to 10 steps, but Canva reduces it. So is it only for designers? So you guys might be, maybe some of, I'm assuming some of you are maybe students, and some of you are maybe like from business background. Some of you are aspiring entrepreneurs who are willing to use images for your business or branding, and some of you may be YouTubers who will like to create, you see, thumbnails and all of that, right? So for Twitter also. So please do tell me questions if you guys have anything specific. So please let me know any questions, and if you can ask me anything specific related to Canva, that also I can answer. Parallelly, I'll check the chat box. So what I'm saying is, whether you are a designer, you are a small business owner, you might be someone who is already into startups and doing branding, or you are an agency, or you are someone who is an educator, or you are like just a YouTube creator, or Instagram, YouTube, and all the social media platforms creator. So Canva can be hugely helpful in that. Now when I talk about each of the platforms, see, we can look at the Canva interface for some time. So are we looking into exploring the technical aspects, or just we can explore the technical aspects? Yeah. Sure. Yeah. Oh, okay, fine, fine. See, so we can look into the software also for some time. See, if you see the course, there will be detailed descriptions of how to do that. But let us say brand kit. Now Canva has a feature called brand kit. I'll just share my screen for a minute. I'll just, Yeah. Sure. you guys are able to see my screen? Yes, Oh, I yes, of am. course, we can. Yeah. We can see. So there is something called as brand kit in Canva. Okay. So here, what you can do is, let us say you are an agency or a team of 5 people. I'm starting from agencies and group of designers. Let us say you want to collaborate on a project. You want to create your entire brand kit. What you can do is, you guys can 5 to 6 people can collaborate, and you can manage different kind of assets. Now let us say, what are the different things required, right? Different things required for agencies, or people who are into this. So the most of the things that are required is like you can engage your audience. So the most of the things that are required is in a website is like logo, icons, fab icon. If you see in the website, let us say front end or back end, you will need lot of images in a website, right? So all this can be designed in Canva. Now let us say, if you are designing one image, आप लोग कोई
एक image download कर रहे हो. Hindi, if like everyone is comfortable. So English, how many people are Yeah, Hindi or guys, English? please let us know. Is Hindi comfortable for you, or like English is, or you're fine with both? Vasant Kumar says he's fine with both. Okay. No, if Starkeel someone is does not, also. yeah. So English is fine with everybody, right? Bhaskar Gupta, yeah, both is fine as of now. Both of Ali Azhar, both is fine. Cool, cool. I'll then speak in English, maybe. Yeah. So, What okay, fine. English, whatever feels good. Okay, so yeah, so the thing is, then yeah, fine. So the thing is, what I was saying about is, let us say you guys are into team, right? 5 6 designers. Now, अभी आप लोग एक वेबसाइट के लिए कर रहे हो, आपको वेबसाइट बनाना है और वेबसाइट का आप लोगो डिजाइन कर रहे हो. पहला क्या करते हो, ब्रांड का सबसे पहला चीज है लोगो डिजाइन. विल ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दैट आइडिया, राइट? सो लोगों का ऐसा हो सकता है, 5 लोगों का क्या होगा कि आप लोगों के 5 लोगों के अलग अलग विजुअल अपील होंगे. कोई चाहेगा लोगो ऐसे होगा. सो यू कैन शेयर दैट प्रोजेक्ट विद एवरीवन, राइट? सो देयर इज समथिंग इनसाइड द ब्रांड किट. आप ये इमेज शेयर कर सकते हो एंड एवरीवन कैन ऐड देयर एलिमेंटल थिंग्स. ये हो गया ब्रांड किट वाला पार्ट, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेट कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट लोगो. टेम्पलेट्स हो जाए, कैरोजल्स हो जाए, एवरीथिंग यू कैन शेयर विथ योर टीम and the team can do that. So you can add all the different elements according to लोगों के हर किसी के पर्सपेक्टिव से हिसाब से आप डिजाइन को इम्प्रोवाइज कर सकते हो. नाउ दिस इज फॉर एजेंसीज. नाउ व्हाई आई हैव टॉक्ड अबाउट एजेंसीज, अगर आप लोग देखोगे क्लाइंट्स आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, अगर आप फ्रीलांसर हो, जनरली आपके पास बहुत सारा बिजनेस आएगा, राइट? आपको क्लाइंट्स का डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल डू, you will generally use Canva for seeing that how many kinds of samples you can give to the client. Let us say client A, आपके पास कोई business आ रहा है, उसको आप लोग क्या करोगे, you will say that sir we have got 4 5 templates for you. Now your team or you as a freelancer might require to share this project. So this is where brand creates, brand collaborations, templates, automatic templates, all of these things are important. Now moving on to the automatic features of Canva, I'll just maybe a demo I can give you guys. So you see, what I'm saying is, so I was talking about this brand kit. Okay, so this is a tool which is branding here. So this is for agencies and this is for if you are taking the work of a complete business that you can do. Now I'll come to, I know you guys are thinking कि आप लोग सोच रहे हो social media के लिए कैसे use होगा, YouTube के लिए, education के लिए, Insta के लिए कैसे होगा. Those are to always there. Those are like the basic Yeah, features. I'll because talk. I feel most of them here joining today are Gen Zs. They are mostly interested about how to make their Instagram and other social media platforms very appealing. Definitely. So I will show that. So I just started from the business end of things. Now you see, we'll look into that. So you see, there'll be, if you just go to design, spotlight here, you will see there are a lot of things. If you can see from logos, flyers, banners, videos. So this is all related to business at first. Websites will come Yes. into it. If you go into the course, you will find a lot of detail. The course is made in design for creators, not much of the business aspects, but this is one thing you can explore. Now business aspects you can see from productivity, brand management, workshops, everything you can design here. Media and publishing. Now most of the top news agencies that you see in India, they are either using Figma or using Canva. Let us say Vion or anything you see, Times Now. So all of them use either Figma or Canva, or most of them use Photoshop. These are the three softwares that people are using most of the time for design, right? And Illustrator is obviously there. So education and all these things are there. Now when you talk about social media, let me just see, this is maybe, yeah. So I'm just showing some carousels. You might have heard about the how different kinds of, see, you can create certificates, you can create templates, you can create thumbnails, you can create so many things out here. But my perspective is that I want to give you the initial outlook. See, there's something called as whiteboards here. Now when you talk about whiteboards, there'll be you might have seen all these kind of infographics that you draw in Pinterest for your own company, giving you different ideas for LinkedIn. Now as a student or as a freelancer, you will be wanting to build your brand in LinkedIn, right? So these kind of infographics you will see quite circulating on LinkedIn. So this is where you can make use of these whiteboards for infographics and flow charts and your own ideas, right? So this is there. Now when you talk about social media, I'll come to platforms. You see Instagram, Facebook, LinkedIn, right? So if for Instagram, what are the major forms of content, consumption?
कंटेंट कहाँ कहाँ से कंज्यूम करते हैं आप देखोगे। इंस्टाग्राम का एक है फीड पोस्ट, दूसरा होगा आपका कैरोसेल्स जो स्लाइडर है आप देखोगे, तीसरा होगा आपका इंस्टाग्राम स्टोरीज, राइट। फोर्थ इज रील कवर्स, यहाँ पे आप वीडियो भी बना सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यूज दिस फॉर वीडियो बिकॉज यू मे नॉट गेट सो मेनी एडवांस फीचर्स। तो इंस्टाग्राम आप स्क्वायर पोस्ट, लैंडस्केप, फेसबुक एड्स आप रन कर सकते हो, मीडिया कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न द थिंग्स, बट आई एम सेइंग द अमाउंट ऑफ फीचर्स, राइट। You can see Instagram reel here, you can create reel, the banners, those stories, those so many things are available. It is all social media, specific, all the banners, LinkedIn cover arts. So social media, all the platforms are easily covered here. But apart from social media also, you can do so many things. The major thing is website. Now when you talk about website, you see, you can design a portfolio website, you can design business websites here. So complete business websites, in some we have done some of the, I have done in for my clients in some of the cases using Canva. Also we use Webflow and all other softwares, but using Canva also we do. So you can create educational websites, retail websites, and Canva has a very unique feature where you can launch their designs for free. So if you take the paid subscription, obviously you will get advanced features, आपको बहुत सारे advanced features मिल जाएंगे, लेकिन फ्री में भी इसमें बहुत सारा कुछ मिलता है। तो ब्रांड किट आपको पेड लेना पड़ेगा, बट कैनवा पेड वर्जन मंथली सब्सक्रिप्शन देना है, एंड इट्स वेरी लेस। आई थिंक कैनवा चार्जेस अराउंड 500 रुपीज और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इन फ्री ऑल्सो यू विल हैव ऑल ऑफ दिस। नाउ व्हेन यू सी दिस इनवाइट मेंबर्स, राइट, so you can easily collaborate with different team members here. You see, 5 to 7 persons team you can have, and with Canva Pro you can have 5 to 7. In free, I think only 2 to 3 people can be the team. So you can also do app designs, right? So so many things are available in this. Now smart mockups can also be done. Abhi mockup kya hota hai? फॉर एग्जाम्पल आप लोग इनिशियली प्लान कर रहे हो कि पूरा प्रोटोटाइप बनाने का, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे आप एक ई कॉमर्स स्टोर, या यू आर डिजाइनिंग टी शर्ट्स, या आप लोग यू कैन एज्यूम यू आर डिजाइनिंग सम डिजिटल प्रोडक्ट और सम डिजिटल साइट और डिजिटल ऐप। जस्ट द डिजाइन एलिमेंट यू कैन डू मॉकअप 5-6 प्रोटोटाइप्स आप लोग शेयर कर रहे हो। ये देखो आप फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा ई कॉमर्स बॉटल बना रहे हो जहाँ पे डिजाइन जाएगा, टी शर्ट डिजाइन वी डू एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मॉकअप्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोडक्ट्स हियर। So Canva is not only about social media. Yes, social media is the dominant thing that people use for, but why Canva? मैंने जो इनिशियली आप लोगों को कहा था कि $40 billion का कंपनी बना, एक लड़की ने शुरुआत किया था इनका। तो शी डिजाइन दिस सॉफ्टवेयर इनिशियली नॉट इवन रियलाइजिंग कि इसका पोटेंशियल कितना है, right? Because girls were not predominantly into detailed designing aspects and all of this, so most of the girls started using it. Almost 23% female population was the user base. धीरे 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 even everyone interacted this, right? And it became friendly for 40 years old, 50 years old, anyone can use it. No, even those who do not have any basic understanding of design, they can completely use and create this. So user friendly से advanced tool तक आप सब कुछ आपको इधर मिलेगा। तो that's why I think it is valued and it is continued to be valued. अभी Canva का AI features भी इसीलिए आया है। See, the thing is, if you know about HTML और CSS, वेबसाइट में आपका क्या होता है? पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड, राइट? सो बैक एंड आप डिजाइन करोगे, कोडिंग करोगे HTML CSS करके। तो आप अगर होस्टिंगर ले रहे हो, GoDaddy ले रहे हो, व्हाट यू विल डू इज आप जाके HTML और CSS का कोडिंग वहां पे अपलोड करोगे, वो आपका बैक एंड टेकन केयर ऑफ होगा। अगर आप फ्रंट एंड का डिजाइन कर रहे हो, मैं फ्रंट एंड UX UI का बात कर रहा हूँ, तो फ्रंट एंड में आपका जो डेवलपर रहेगा UX UI करेगा, तो उसको आप इमेजेस सबमिट करोगे, राइट? कि पुट दिस इनटू इंडेक्स PHP। अगर आप HTML करते हो, आपको पता चलेगा पब्लिक HTML में यू आर गोइंग एंड अपलोडिंग दिस फाइल्स, राइट? तो उसके अंदर ये जो इमेज डिजाइन आप दोगे कैनवा से, वो आप जनरेट कर सकते हो। सो कैनवा डिजाइन जनरेट करने में हेल्प करता है। कोडिंग में डेफिनेटली द बैक एंड पार्ट इज देयर, वो द डेवलपर विल डू दैट। Yeah. So I hope Vasant Kumar was able to understand, and I hope, yeah. And any more questions, guys? If you have any more questions, please feel free to ask. Yes. And why are you guys wanting to learn Canva? That specific reason, if you think you will have questions. So yeah.
So someone is asking, can we create reel using Canva? No, we can create reel using Canva, but it will be mostly automated templates. आपको auto generated template मिलेंगे. अगर आप highly advanced reel create करना चाहते हो, जैसे beer bicep, ध्रुव राठी, या आप इंस्टा पे देखते हो high animations, so those things are not possible. Basic Okay. reels, yes. Basic ads and basic text डाल के एकदम simple reel, definitely yes. With stock videos and all, yeah. Okay, like not no like editing cannot be done. Only the एडिटिंग, basic. सम बेसिक एडिटिंग यू कैन डू. बेसिक स्टॉक Okay. फुटेज आप एड कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी फीचर में होता है ना टेक्स्ट लिखना, हाँ, वैसा वैसा कर तो सकते वैसा हैं. आप लोग क्रिएट कर सकते हो. Okay. सो So कैन, Ankita Soni is asking, can we earn money using Canva? यस डेफिनेटली. सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सोल्ड, एंड लोग इसलिए पेज सब्सक्रिप्शन लेते हैं कैनवा का. कैनवा का आप देखोगे तो मैं जो सी आपको साइट्स शो कर रहा था, इवन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, आप देखोगे स्कूल्स और कॉलेजेस को बहुत ज़रूरी होता है क्रिएटिव्स का. सो दे हैव दिस थिंग हियर, एजुकेशन. एंड आई थिंक यू गाइस कैन सी हियर स्क्रीन. तो यहाँ पे आप देखोगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, टीचर्स के लिए चाहिए होता है, टीचर्स को रिसोर्सेज, हायर एजुकेशन, एमबीए, बी स्कूल्स में आपका बहुत सारा. देखिए आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस डिजाइन होता है ना, आप लोग अगर कॉलेज में, तो आपका प्रोस्पेक्टस कहाँ डिजाइन होता है? ऑब्वियसली वो इमेज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में ही होता है. तो आप कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस डिजाइन कर सकते हो, कंपनीज के ब्राउचर्स, सब कुछ इसमें. तो वेडिंग कार्ड से लेके इवन इवन कैनवा हैज केप्ट थिंग फॉर वेडिंग कार्ड्स. आई थिंक आई विल जस्ट शो यू गाइस इफ देयर इज, maybe, yeah, you see wedding photo invitation, wedding video college. So it is like, too many things are there. So wedding, so obviously definitely you can earn money, it's a tool for. So even you can design templates and sell in Canva. If I, you search Canva templates for Fiverr. I have not told about all these things in the class, because if you learn the skill anyways, you'll know how to earn the money. So you see 24 best Canva templates to buy online. So even आप अगर टेम्पलेट्स बना के बेच भी सकते हो, आपका टेम्पलेट्स यू कैन सेल टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स. डिपेंड करता है आप कितना अच्छा डिजाइन करते हो. अगर आप अच्छा डिजाइन करते हो तो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपका डिजाइन परचेज कर लेंगे और वो अपने सोशल मीडिया में यूज करेंगे. आप ऐसे साइट्स चेक कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को प्राइस मिलेगा, कैनवा के टेम्पलेट्स के कितने प्राइस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये सब आप कर सकते हो डेफिनेटली. यस. And Tejas is asking, sir, please can you give a short demo? How can we design a web page? Okay, can you? Okay, so before that, someone has a question. Vasant Kumar, are Yeah. YouTube tutorials sufficient to learn Canva for making cover page in documents and social media infographics? Which see, why people do not now? You see, Udemy is there, Skillshare is there, Tokskill Learn is there. All this, even I am an educator. Why people learn personalized? Why we handhold? हम क्यों course बनाते हैं? अगर सब, because आप अगर कहीं, वैसे तो आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो, इट्स ऑल स्कैटर्ड. लेकिन यहाँ पे आपको एक गाइडेड वे से कि आप पहले ये करो, ऐसे जाओ, तो ये आपको दिया गया है, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस. इवन विथ Yeah. एमबीए, इवन विथ लॉ स्कूल्स, आप लॉ बाहर से भी पढ़ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लॉ स्कूल जाते हो. सो इट्स लाइक दैट कि आपको अगर डायरेक्शन चाहिए, जो मैंने कोर्स बनाया है, आपको वो जानना है पर्सपेक्टिव, आप वो कर सकते हो. सो एक personalized way में, sorted way में, to always be there and guide for you, it's a different thing. exactly. Yeah. So it's that's the difference. So Tejas, yeah. So short demo of how can we design a web page. See, I cannot do that in the webinar. This webinar was supposed to be, about giving introduction as to how Canva can empower, or Canva kya kya kar sakta hai. Almost we have done with 30 minutes. Definitely, if you take the course and in maybe in some sessions we can do that in the Yes, website. definitely. Tejas, you can definitely go and check out Mr. Jahid's course. And currently, we have a 65% discount which is going on. So you can definitely check out the course, and you can see that it does wonders. It will do wonders for you if you see the course, and it will be really helpful. Yeah. So yes, anyone else has got any questions in particular? Should I proceed? Okay, cool. So fine, yeah. So see, Yeah. web page and all, yeah, definitely. So now when we are talking about websites, now see, if you guys are already studying in B school, you have to give a lot of presentation. आप लोगों के पास startup clubs होंगे कॉलेज में, आपका बहुत सारा marketing club, HR club, ऐसा बहुत सारा clubs होगा, right? So आपको presentation often देना पड़ता है. Even आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको presentations देना पड़ता है. तो हम presentations के लिए generally क्या use करते थे पहले? Google slide, Google PPT, right? So you can use
Canva for PPT. Now when you talk about Canva for PPT, Google PPT अगर आप देखते थे आपके साइड में themes रहेगा, SATA themes रहेगा, तो यहाँ पे you can design highly customized PPTs. Now अभी PPTs can be used for pitch deck. अभी obviously pitch deck, if you guys know pitch deck क्या होता है, लोग इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए pitch deck डिजाइन करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए अगर आप pitch deck डिजाइन करो, आपका सेल्स कितना है, यूजर बेस कितना है, मार्केट रिस्क कितना है, ये सब कुछ विजुअली दिखाना होता है, राइट? फिगर्स, आइकन्स, ऑल दीज थिंग्स. ऑब्वियसली देयर आर मेनी साइट्स टू डू दैट, बट कैनवा ने कस्टमाइज वे में किया है जहां पे आप टेम्पलेट को डायरेक्टली ला सकते हो. सो इन दैट वे ऑल्सो कैनवा इज वेरी नाइस, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड पीपीटी डिजाइन्स मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट फॉर दोज थिंग्स. नाउ कैनवा रिसेंटली, एज आई वाज टेलिंग यू, लास्ट 2 महीने में व्हेन आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम कैनवा ऑन माय ट्विटर, they say thanks for, I was just appreciating about their features that you guys are doing this. And उस समय क्या चल रहा था कैनवा में, they had this count that some challenge was going on. So this feature docs, now Google Docs or Microsoft Word is one of the important thing जो हम लोग देखते हैं, but यहाँ पे Canva has introduced a new visual design docs. अभी ये doc आपका कहाँ पे काम आएगा? You might have heard about something called as white paper for business. अगर आप white paper सर्च करोगे तो ऑल द टॉप एजेंसीज एंड कंसल्टेंसीज एवरीवेयर, बिजनेस वाइट पेपर. तो कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट हो वो वाइट पेपर में जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, एंटायर थिंग. सो यू कैन इवन मेक, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे वाइट पेपर की जरूरत है, बिजनेस के स्टडीज है, या यू आर डूइंग योर PhD, सो मेनी अदर थिंग्स, एकेडमिक वर्क या corporate detail research, market research में अगर आप हो, तो all the white papers can be designed here. So visual docs. So this is another thing. So AI image generator is there. You can definitely go and check into the AI image generator. But apart from that, you see infographic. Pinterest monetize किया जा सकता है. Pinterest से आप लोग, Pinterest का जो आप लोग infographics देखते हो, right? So you will see Pinterest, all the infographics that you see. So all these kind of infographics can be designed in Canva. ये सब आप Canva में डिजाइन कर सकते हो. यहाँ पे आप देख रहे हो, this is a branding and website design, right? So this can be, this is a 1920 into 1080 resolution का है ये सब कुछ, SWOT analysis. So ये डिजाइन सब ऐप के लिए भी यूज कर सकते हो. मेरा जैसा पर्सनल ऐप है प्ले स्टोर में, डिजिटल जाहिद एकेडमी, मैंने इसी से बनाया है अपने डिजाइंस, राइट? सो आप देखोगे ब्रांडिंग मैप सब कुछ यहाँ पे. तो what I'm saying is infographics can be hugely done, right? So apart from that, when it comes about monetizing, other ideas आपका इतना important नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे कि कैसे आप इसको फ्रीलांसर की तरह मोनिटाइज कर पाओ या आप स्टूडेंट की तरह इसको यूज कर पाओ, राइट? So calendars and all can be designed here. Book covers can be designed. Mind map आप use कर सकते हो. Graphic design. These all are not monetizable. So when I'm talking about all these things, you have so many other opportunities here. And also one most important thing is you can print products here. अभी print products का अगर बात करें, अगर आप let us say आपको बनाने का मन है कुछ candle business, या you are planning some craft aesthetic business, कुछ भी, आप वेबसाइट बनाने के बाद आप क्या करोगे? प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में कौन सा प्रिंट जाना चाहिए, राइट? तो जनरली ऑल स्मॉल काइंड ऑफ थिंग्स, डिजाइंस यू कैन जनरेट हियर. बट ऑब्वियसली फिग्मा इज ए कंपटीशन. फिग्मा थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन फिग्मा में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत सारे टाइम्स. So invitees, cards. So starting from social media, presentation, whiteboards, brand agencies, and service proposals. अभी हम clients को जो proposal देते हैं, I myself do for clients. I cannot, maybe we don't have much time, so I cannot show those proposals. You can design proposal for clients, okay? So all of these things you can do in that, or detailed brand positioning, brand architecture, brand infrastructure, all of these things आप कर सकते हो. तो Canva has a huge potential, and यही है, like I'll just like to take the questions, because yeah, we cannot go into the deeper aspect of it. The course is there, and definitely maybe we will have some advanced thing if you guys are interested too much in the advanced part. Yes. Yes, Yeah. yes, guys. Please feel free to comment your queries if you have any more questions that, or you would like to know any more things about it. So freelancing के लिए कितना लोग देख रहे हैं? Like how many people are using Canva for freelancing? Like you guys can definitely, yeah. So if it's freelancing, you can definitely see there are a lot of opportunities here.
So Please. Adnan has raised his hand. Adnan wants to say something, I guess. How to make in? I want to know how. Infographics. Okay. Okay. See. Okay. So you are economics student and graph infographics with graph with her. So let us say I'm assuming आप economics के हो तो demand and supply curve आप draw करना चाहते हो या आप market representation या you are doing pie charts, right? So all these options are available here. So you can all the okay. So just a second. So if you just so if you just see this element section in Canva. Okay, just a second. Okay. सो एलिमेंट्स में अगर आप जाओगे लाइन शेप है ना लाइंस और शेप्स है तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यू वांट अ पाई डायग्राम लेट्स से पाई चार्ट राइट so you see pies are here so अगर आपको I'm just assuming okay I'm just showing because we have 10 minutes I was not supposed to show this but still just so that yeah so you see you can definitely create pie charts and you just go here and economics let us say how much of the market is representing you know GDP का आप segmentation करना चाहते हो let us say you know GDP कैसे constitute होता है अलग अलग percentage national income and all those things so you can definitely use pie charts and all these things there are different kind of text fonts so you can this is endless you may see ये बहुत simple लगेगा देखने में कि यहाँ कुछ तो है नहीं इतने सारे features है लेकिन ये endless है इसी में बहुत डीप आप जा सकते हो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स देयर आर लाइक यू नो इफ यू टेक द पेड वर्जन्स एंड ऑल ऑफ दिस इन कैनवा इट इज गोज टू लाइक thousands of templates you know videos stock footages everything you can find here so I just created one thing that is you know एक insta story or something like that pie chart right so आप ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो एक एलिमेंट के लिए so it is a multi-layered software okay So if we have data on spreadsheet, like Google Sheets or Excel, we can import it to graphs. Vasant Kumar wants to know that. you can definitely cannot directly import it you have to directly import is not there so you have to do it you know manually yes how could we use this platform for freelancing okay how can I use my post and design see now आप अगर डिजाइन कर रहे हो let us say तो आप लोगों को Instagram influencers तो आप देखे होंगे बहुत सारे influencers they are using carousels right slide carousels for businesses तो क्या होता है हर किसी का यूनिक डिजाइन होता है तो एक यूनिक डिजाइन को वो लोग क्या करते हैं दे विल कैरी आउट थ्रू देयर एंटायर प्रोफाइल वो अगर नेक्स्ट 500 पोस्ट विल बी इन दैट फॉर्मेट ओनली तो वो फॉर्मेट अगर आप क्रैक करके एक डिजाइन दे देते हो कोई क्लाइंट है लेटेस्ट से जिसको क्लीन यू नो क्लीन ऐप के लिए चाहिए या किसी को अपने यू नो ग्लास डोर कंपनी के लिए चाहिए सब कोई डॉक्टर्स या यू नो अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स हैं जिनको डिजाइन चाहिए तो आप कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहते हो वो आपको पहले चूज करना पड़ेगा फ्रीलैंसिंग भी आप जनरली हर इंडस्ट्री का आप डायरेक्टली नहीं कर सकते राइट तो फ्रीलैंसिंग अगर आप ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए करना चाहते हो आप सोचो कि ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए मैं करूंगा तो आप उस हिसाब से ई कॉमर्स का डिजाइन मास्टर करो ई कॉमर्स डिजाइन में क्या होगा शॉपिफाई के लिए बैनर्स ई कॉमर्स डिजाइन में कैसे कैसे आएंगे मर्चेंडाइज आएंगे ई मर्चेंडाइज सो उस हिसाब से आप जब क्रिएट करते जाओगे इंस्टा हो सोशल मीडिया हो लिंक्डइन के लिए आप क्रिएट करते जाओगे अंकुर वारिको एंड ऑल दिस पीपल यू हैव सीन राइट इनका स्लाइड्स आते हैं all LinkedIn and all these platforms so you can definitely use for this aspect लेकिन आपको अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा मास्टर करना पड़ेगा आपको एक सेगमेंट लेके ही चलना पड़ेगा तो पोस्ट योर डिजाइंस आप फाइबर अपवर्क अलग अलग जगह है देयर आर अनलिमिटेड यू नो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इवन आप अगर अपना पर्सनल ब्रांडिंग अच्छे से करते हो तो लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर डिजाइंस राइट सो इट्स अप टू यू आप कैसे अपना वो अलग एस्पेक्ट है पर्सनल ब्रांडिंग तो वो अलग हो गया दैट इज अप टू योर ओन थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाओगे खुद को फ्रीलांसर की तरह कैसे पोजीशन करोगे राइट यस या ओके Thank you, sir. So any more questions, guys? is there any questions or like we are good to go Um, no one is asking. I think so. Everyone has listened very quietly and nicely, and few people have asked questions. या नो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इफ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि आप
इसको सिर्फ आप वीडियो देखने से कोर्स, लेकिन कोर्स इज डेफिनेटली द स्टार्टिंग पार्ट, देन यू प्रैक्टिस इट एंड यू डू इट, यू कैन डेफिनेटली मेक यूज ऑफ इट, एंड इन लॉन्ग रन आप स्ट्रेटेजाइज करके बहुत कुछ कर सकते हो. द कोर्स इज वन वे, यू टेक इट एंड यू डू इट प्रॉपरली, स्ट्रेटेजाइज, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. सो आई हैव प्लान द कोर्स इन दैट मैनर सो दैट कि आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ माइनर एस्पेक्ट्स में, और बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लोगों को मैंने माइंड में रख के ये कोर्स डिज़ाइन किया है. सो होप दैट विल बी हेल्पफुल. You can check it out in the links they have shared. Yeah, thank you so Yes. much everyone for joining. And thank you, everyone. Really appreciate your time, and majorly, Mr. Jahid, thank you so much for Thank joining with us today. It was a great pleasure to have you, and without you, it was completely impossible. But yeah, really, thank you so much, Mr. Jahid, you. and Yeah, I thank you believe everyone. Bye. No, I yeah. believe everyone found the course very informative and helpful for them. And I would like to tell everyone that thank you all and keep flourishing your creativity. A big thanks to everyone. Thank you, Mr. Jahid, for joining. Thank you. Bye bye everyone. Yeah, namaskar. Bye bye, everyone.